प्रेस की शांति तुझे मेरे साथ रहे। प्रभु की विनती आज मेरे नए मेहमान के रूप में करिए, इसका स्वागत करेंगे और आपसे नया आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो हम प्रभु की विनती आप सबको आशीर्वाद प्रदान और सदा आपके साथ रहेगा। मेरे प्रभु की विनती Cara amata famiglia, cari amati fratelli e sorelle, bambini e giovani. Sono la vescova Lilian Paul. Dear beloved family, dear beloved brothers and sisters, children and youth, I am Lavanya Peter. प्रिय प्रिय परिवार, प्रिय प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों और युवाओं, मैं मोनिका विनोद सुरीन हूँ। Questo è il 13° giorno di aprile. Oggi è la Domenica delle Palme. Domenica delle Palme, ecco un esempio. This is the 13th day of April. Today is Palm Sunday. Palm Sunday, here's an example. A personal prayer for Palm Sunday. यह अप्रैल का 13वां दिन है। आज पाम संडे है। पाम संडे, यहाँ एक उदाहरण है। पाम संडे के लिए एक व्यक्तिगत प्रार्थना। Una preghiera personale per la Domenica delle Palme. Asterisco Dio misericordioso, in questa Domenica delle Palme, ricordiamo l'ingresso trionfale di tuo Figlio, Gesù Cristo, a Gerusalemme. Tara Chinho, gracious God, on this Palm Sunday, we remember the triumphant entry of your Son, Jesus Christ, into Jerusalem. We thank you for sending him as our King, not on a war horse, but on a humble donkey, bringing a message of peace and salvation. तारांकन दयालु ईश्वर, इस पाम संडे पर हम आपके पुत्र यीशु मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश को याद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें हमारे राजा के रूप में भेजा, युद्ध के घोड़े पर नहीं, बल्कि एक विनम्र गधे पर, शांति और मोक्ष का संदेश लेकर। Ti ringraziamo per averlo mandato come nostro re, non su un cavallo da guerra, ma su un umile asino, a portare un messaggio di pace e salvezza. Tara Chinho, forgive us, Lord, for the times we seek earthly power and glory rather than the humble service of your kingdom. Help us to truly recognize Jesus as the King of our hearts, and to offer him our own shouts of praise and allegiance. तारांकन हे प्रभु, हमें क्षमा करें उन समयों के लिए जब हम आपके राज्य की विनम्र सेवा के बजाय सांसारिक शक्ति और महिमा की तलाश करते हैं। हमें यीशु को अपने दिलों के राजा के रूप में सही मायने में पहचानने और उनकी स्तुति और निष्ठा के अपने नारे लगाने में मदद करें। Asterisco perdonaci, Signore, per le volte in cui cerchiamo il potere e la gloria terrena piuttosto che l'umile servizio del tuo regno. Tara Chinho, as we wave our palms today, may they be a symbol of our willingness to follow Jesus, not just in triumph, but also through the challenges and sacrifices that may come. Strengthen us for the journey of Holy Week, that we may deeply reflect on his suffering, death, and glorious resurrection. तारांकन आज जब हम अपनी हथेलियां हिलाते हैं, तो वे यीशु का अनुसरण करने की हमारी इच्छा का प्रतीक बने, न केवल विजय में, बल्कि आने वाली चुनौतियों और बलिदानों के माध्यम से भी। पवित्र सप्ताह की यात्रा के लिए हमें मजबूत करें, ताकि हम उनकी पीड़ा, मृत्यु और शानदार पुनरुत्थान पर गहराई से विचार कर सकें। Aiutaci a riconoscere veramente Gesù come il Re dei nostri cuori e a offrirgli le nostre grida di lode e fedeltà. Asterisco mentre oggi agitiamo le nostre palme, possano essere un simbolo della nostra volontà di seguire Gesù, non solo nel trionfo, ma anche attraverso le sfide e i sacrifici che potrebbero presentarsi. Rafforzaci per il cammino della Settimana Santa, affinché possiamo riflettere profondamente sulla sua sofferenza, morte e gloriosa risurrezione. Asterisco venga il tuo regno, Signore, nelle nostre vite,
nelle nostre comunità e in tutto il mondo. Osanna nell'alto dei cieli. Amen. Primo versetto biblico. Ezechiele 11, versetto numero 19. darò loro un cuore nuovo. तारांकन हे प्रभु, आपका राज्य हमारे जीवन में, हमारे समुदायों में और पूरी दुनिया में आए. सर्वोच्च में होसन्ना. आमीन. Primo versetto biblico. Ezechiele 11, versetto numero 19. Darò loro un cuore nuovo, e metterò dentro di loro uno spirito nuovo, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne. Amen. First Bible verse speak. Ezekiel 11 verse number 19. I will give them one heart, and I will put a new spirit within them. I will take out the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh. पहला बाइबल वचन बोले. यहेजकेल 11 पद संख्या 19. मैं उन्हें एक हृदय दूंगा और उनके भीतर एक नई आत्मा डालूंगा. मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा. Testo di questo versetto. Posizione. Asterisco. Questo versetto appare in Ezechiele capitolo 11, in particolare dopo che Ezechiele ha descritto una visione dei capi corrotti a Gerusalemme e dell'imminente giudizio di Dio. Ezekiel সকাল 11টা বেজে 19 মিনিট. Context of this verse. Position. তারা চিহ্ন. This verse appears in Ezekiel chapter 11, specifically after Ezekiel has described a vision of the corrupt leaders in Jerusalem and God's impending judgment. श्लोक का संदर्भ. स्थिति. तारांकन. ये श्लोक यहेजकेल अध्याय 11 में आता है, विशेष रूप से यहेजकेल द्वारा यरूशलेम में भ्रष्ट नेताओं और परमेश्वर के आसन न्याय के दर्शन का वर्णन करने के बाद. Asterisco fa parte di un cambiamento di tono in cui Dio, pur riconoscendo la punizione meritata, svela anche il suo piano per una speranza futura e un popolo trasformato. তারা চিহ্ন. It is part of a shift in tone where God, while acknowledging the deserved punishment, also unveils his plan for future hope and a transformed people. तारांकन. ये स्वर में बदलाव का हिस्सा है जहां परमेश्वर, योग्य दंड को स्वीकार करते हुए, भविष्य की आशा और एक परिवर्तित लोगों के लिए अपनी योजना का भी अनावरण करता है. Asterisco precede la visione della scomparsa della gloria di Dio da Gerusalemme, evidenziando che anche nel giudizio, l'intenzione ultima di Dio è la restaurazione. তারা চিহ্ন. It comes before the vision of the departure of God's glory from Jerusalem. Ezekiel সকাল 11টা বেজে 22 মিনিট -25, highlighting that even in judgment, God's ultimate intention is restoration. तारांकन. ये यरूशलेम से परमेश्वर की महिमा के प्रस्थान के दर्शन से पहले आता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि न्याय में भी परमेश्वर का अंतिम इरादा पुनर्स्थापना है. Secondo versetto biblico pronunciato. Nel Vangelo di San Matteo, capitolo 21, versetto 9. Ora la folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava. Second Bible verse spoken. In the Gospel of Saint Matthew, chapter 21, verse number 9. Now the crowds that are going before him and those following him were crying out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is the one coming in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Verse. बाइबल की दूसरी आयत बोली गई. सेंट मैथ्यू के सुसमाचार में अध्याय 21, आयत संख्या 9. अब जो भीड़ उसके आगे चल रही थी और जो उसके पीछे चल रही थी, वे चिल्ला रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशाना. धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आ रहा है. सर्वोच्च में होशाना. आयत. Osanna al figlio di Davide. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Versetto. Gesù ricevette al suo ingresso a Gerusalemme. Asterisco.
e la folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava. Questo evidenzia il gran numero di persone che riconobbero Gesù in questa processione, sia coloro che lo precedevano che coloro che lo seguivano. Jesus received as he entered Jerusalem. Tara Chinho, and the crowds that went before him and that followed him were shouting. This highlights the large number of people who acknowledged Jesus in this procession, both those leading the way and those behind him. It signifies a widespread recognition, at least at this moment, of Jesus' significance. यरूशलेम में प्रवेश करते ही यीशु का स्वागत हुआ। तारांकन और जो भीड़ उसके आगे चल रही थी और उसके पीछे चल रही थी, वह चिल्ला रही थी। यह इस जुलूस में यीशु को स्वीकार करने वाले लोगों की बड़ी संख्या को उजागर करता है, जो आगे चल रहे थे और जो उसके पीछे चल रहे थे। ये कम से कम इस समय यीशु के महत्व की व्यापक मान्यता को दर्शाता है। Significa un riconoscimento diffuso, almeno in questo momento, dell'importanza di Gesù. Ultimo versetto biblico di cui parlare. Salmo capitolo 105, versetto 4. Last Bible verse to talk about. Psalm chapter 105, verse 4. Seek Yahweh and His strength. Seek His presence continually. बाइबल की आखिरी आयत जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। भजन अध्याय। Cercate il Signore e la sua forza. Cercate sempre la sua presenza. Per il 13 aprile 2025, riflettere sul Salmo 105, 4 può servire da promemoria per dare priorità al nostro rapporto con Dio. For April 13, 2025, reflecting on Psalm 105, 4 can serve as a reminder to prioritize our relationship with God. It encourages us to actively pursue Him, rely on His strength in whatever circumstances we face, and cultivate a continuous awareness of His presence in our lives. This pursuit should be a daily practice, drawing strength and guidance from Him as we navigate life's journey. भजन अध्याय 105, आयत 4। यहोवा और उसकी शक्ति की खोज करो, उसकी उपस्थिति को निरंतर खोजते रहें। 13 अप्रैल 2025 के लिए भजन 105, 4 पर चिंतन करना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को प्राथमिकता देने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है। Ci incoraggia a ricercarlo attivamente, a fare affidamento sulla sua forza in qualsiasi circostanza ci troviamo ad affrontare e a coltivare una costante consapevolezza della sua presenza nelle nostre vite. The Psalm's historical account then serves as a testament to the value and reward of such seeking. Would you like to know more about this verse? ये हमें सक्रिय रूप से उसका अनुसरण करने, हम जिस भी परिस्थिति का सामना करते हैं, उसमें उसकी शक्ति पर भरोसा करने और अपने जीवन में उसकी उपस्थिति के बारे में निरंतर जागरूकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये खोज एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए, जीवन की यात्रा में उससे शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करना। भजन का ऐतिहासिक विवरण इस तरह की खोज के मूल्य और पुरस्कार के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। क्या आप इस श्लोक के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? आइए प्रार्थना करें। Questa ricerca dovrebbe essere una pratica quotidiana, traendo forza e guida da Lui mentre percorriamo il cammino della vita. Il racconto storico del Salmo serve quindi a testimoniare il valore e la ricompensa di tale ricerca. Vuoi saperne di più su questo versetto? Preghiamo. O Madre Maria, oggi è aprile. È il quarto mese dell'anno 2025. Colletta tradizionale per la Domenica delle Palme. Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo tenero amore verso il genere umano hai mandato tuo Figlio, nostro Salvatore Gesù Cristo, a prendere su di sé la nostra carne e a soffrire la morte sulla croce,
concedici la grazia di seguire le sue orme con fermezza di fede, affinché possiamo condividere la sua croce. Let's pray. O Mother Mary, today is April. It is the 4th month of the year 2025. A traditional collect for Palm Sunday. Almighty and ever-living God, who in your tender love toward the human race sent your Son our Savior Jesus Christ to take upon him our flesh and to suffer death upon the cross, grant you us the grace to follow his steps with steadfastness of faith, that we may share his cross and finally his resurrection. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Don't forget my YouTube channel. हे माता मरियम, आज अप्रैल है। ये वर्ष 2025 का चौथा महीना है। पाम संडे के लिए एक पारंपरिक संग्रह। सर्वशक्तिमान और सदा जीवित रहने वाले ईश्वर, जिन्होंने मानव जाति के प्रति अपने कोमल प्रेम में अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमारे शरीर को धारण करने और क्रूस पर मृत्यु को सहने के लिए भेजा, हमें विश्वास की दृढ़ता के साथ उनके कदमों का अनुसरण करने की कृपा प्रदान करें, ताकि हम उनके क्रूस और अंततः उनके पुनरुत्थान को साझा कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, जो आपके और पवित्र आत्मा, एक ईश्वर के साथ अभी और हमेशा के लिए जीवित और शासन करते हैं। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।